This is the topic from Unit 2 of Information Practices. The name of today's topic is Literals of Python. So let's start the class. First, what is literals, or we can say that values? So students, literals are data items that have a fixed value. Python supports several kind of literals. लिटरल्स ऐसे डेटा आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप a इज इक्वल टू 2 टाइप करते हैं जब आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और वी कैन से दैट जब आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, तब इस 2 को लिटरल कहा जाता है जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. वी कांट चेंज दैट वैल्यू. On the basis of this, Python supports several kind of literals. First, string literal, second, numeric literals, third, boolean literals, fourth, special literals, and fifth, literal collection. Let's discuss it one by one. First, string literals. It is a collection of characters enclosed in a double or single quotes. Student, the text, or we can say that a group of characters enclosed in quotes form a string literal in Python. For example, Python ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हमने डबल कोट्स में लिख दिया है, तो अब यही पाइथन स्ट्रिंग लिटरल के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, बट हमने नंबर को ग्रुप करने के लिए सिंगल कोट्स लगा दिया है. देन अब ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के जैसे ट्रीट करेंगे और इसे भी हम स्ट्रिंग लिटरल्स ही कहेंगे. इस टाइप से इन अ पाइथन बोथ सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन कोट्स सच एज केवी डबल कोट्स में भी लिखा है, केवी सिंगल कोट्स में भी लिखा है, तो ये आपका स्ट्रिंग लिटर की तरह बिहेव करेगा. जब हम पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ कैसे किया जाता है. After that, let's see non-graphic characters. Student, it is also a part of string literals. So let's see what is non-graphic characters. Student, they are the special characters which cannot be typed directly from keyboard. हम ऐसे कैरेक्टर जिसे कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं, वो सभी कैरेक्टर आपके नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक बैक स्पेस, टैब्स, एंटर and many more. When the characters are typed, they perform some action. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैब की को प्रेस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है. वहाँ पर आपको टाइपिंग नहीं दिखाई देती है, बट सर्टन एक्शन परफॉर्म होती है. These are represented by escape character, and escape character are always begin from backslash characters. Yes, student, no character is typed. When these keys are pressed, only some action takes place. हमेशा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर बैक स्लैश के साथ ही यूज किए जाएंगे. इन दिस टेबल देर आर सो मैनी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अवेलेबल. डबल स्लैश, सिंगल कोड, डबल कोड, आस्की बेल, बैक स्पेस. ऑलवेज देखो स्टूडेंट, इन सभी कैरेक्टर्स में स्लैश का यूज़ किया है. तब जब आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तब अल्फ़ाबेट अगर ए आप यूज़ कर रहे हो और उसके पहले आपने स्लैश का यूज़ किया हो तो वो आस्की BELL बेल के जैसा वर्क करेगा. स्टूडेंट, दिस sequence representing slash, single quote, double quote, this character can be typed from the keyboard, but when used without escape sequence, these carry a special meaning and have a special purpose. If these are be typed as it is, then escape sequence should be used. The name of topic is string type in Python. How many type of string used in Python? So Python allows you two type of string. First, single line string, and second, multi-line string. The string we create using single or double quotes are normally single line string. That is, they must terminate in one line. For example, name is equal to KV and press enter. Python will show you an error.
EOL means end of line by scanning string literal. The reason is quite clear. Python by default creates string single line with both single quotes and it terminate in the same line by quotes. मीन्स आपने स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन आपने उस कोट्स की एंडिंग नहीं की थी. दैट्स द रीज़न वहाँ पे क्या शो होती है एरर. Student, if at the end of a line there is no closing quotation mark for an open quotation mark, Python show an error. Means it is necessary or compulsory. अगर आपने डबल कोट्स ओपन किया है तो आपको लाइन के एंड में उसे क्लोज भी करना है, अदरवाइज पाइथन जनरेट्स एन एरर मैसेज. After that, multi-line string. Sometimes we need to store some text across multiple lines. For that, Python offers multi-line string. Student, कभी कभी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग ना चाहते हुए हमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हमारे प्रोग्राम में ऐड करनी है. तब उस सिचुएशन में पाइथन हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देता है. टू स्टोर मल्टी लाइन स्ट्रिंग पाइथन प्रोवाइड्स टू वेज. दो तरीके हैं जिससे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारे प्रोग्राम में दे सकते हैं. फर्स्ट, बाय एडिंग बैक स्लैश एट एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल और डबल कोटेड स्ट्रिंग. आपने अगर आपके प्रोग्राम में डबल कोटेड या सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लिखी है और आप उसे मल्टी लाइन बनाना चाहते हैं तो एंड ऑफ द लाइन आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बैक स्लैश. जैसे आप बैक स्लैश लिखोगे और उसके बाद आप जितनी भी लाइन टाइप करते चलोगे और लाइन का एंड ना बताते हुए कंटिन्यूस लाइन या मल्टीपल लाइन बनती चली जाएगी. इन दिस एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू डबल कोड 1/6 मॉल रोल लिखा है, उसके बाद स्लैश सिंबल का यूज़ किया है. तो अब आप जितने भी टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे वो लाइन बाय लाइन इंक्रीज होते जाएंगे. मीन्स वो इस स्ट्रिंग की एंडिंग शो नहीं करेंगे, वो सिंगल से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, मल्टी लाइन में. लेट्स सी द सेकेंड वे ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. बी, बाय टाइपिंग टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स. मीन्स अब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, ट्रिपल कोटेशन मार्क के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने पाइथन प्रॉम्प्ट के फ्रंट में एड्रेस लिखा है इज इक्वल टू 3 टाइम्स या ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया है. तो अब आप जब भी एड्रेस आगे कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करोगे और उसमें आप वैल्यू एंटर करवाते जाएंगे तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के जैसा ट्रीट करेगा. जैसे यहाँ प्रिंट कमांड में क्या पास कर दिया है, एड्रेस. देन 1/7 पीट विहार न्यू दिल्ली इंडिया. कितनी लाइंस हो गई यहाँ पर, 3 लाइंस हो गई. तो अब आपका एड्रेस कैसे बिहेव कर रहा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के जैसे. मल्टी लाइन स्ट्रिंग में आपको ट्रिपल कोट्स ओपन करने के साथ साथ एंड ऑफ द लाइन आपको ट्रिपल कोट्स के थ्रू क्लोज भी करना होगा, तभी आपका सिंगल लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा. आफ्टर दैट, साइज ऑफ स्ट्रिंग. Python determines the size of a string as the count of characters in the string. स्टूडेंट, अगर आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है उसमें आप गिवन स्ट्रिंग जो है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं वही उस स्ट्रिंग की साइज होती है. फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ स्ट्रिंग XYZ इज 3. यहाँ पर एक स्ट्रिंग है XYZ और उसकी साइज कितना है, 3 है. वाई, बिकॉज देर आर 3 कैरेक्टर्स X, Y एंड Z. तो इस टाइप से सभी कोई गिवन स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को हम काउंट करते हैं वही स्ट्रिंग की साइज होती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज वेलकम. एज 7 मीन्स द साइज ऑफ वेलकम स्ट्रिंग इज 7. But if your string literal has escape sequence contained in it, then make sure to count the escape sequence as one character. मीन्स स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस है तो उसको हमेशा क्या यूज़ करोगे, 1 कैरेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रिंग में 2 बैक स्लैश दिखाई दे रहे हैं, ये एस्केप सीक्वेंस है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैक स्लैश को, इसीलिए इसका साइज कितना होगा, 1. द साइज ऑफ सेकेंड इज 3 बिकॉज 3 अल्फ़ाबेट इज देयर. नेक्स्ट, स्लैश ए इज एन एस्केप सीक्वेंस, दस 1 कैरेक्टर हम इसे ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट में फॉर टाइपिंग apostrophe sign escape sequence slash has been used, then the size is
11. So size of string means number of character used in particular string. The name of topic is numeric literals. Student, it is a second type of literals. The numeric literal in Python can be belong to any of the following numerical types. First, integer literals. It contain at least one digit and must not contain decimal point. It may be contain positive और नेगेटिव साइंस मीन्स इंटीजर लिटरल में ऐसे नंबर से डिजिट आएंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे. Integer literals are whole numbers without any fractional part. Student, an integer constant must have at least one digit and must not contain any decimal point. It may be contain either plus or minus sign. A number with no sign is assumed to be positive, and commas cannot appear in an integer constant. Student, Python allows three types of integer literal. First, decimal integer literal. Second, octal integer literals. And third, hexadecimal integer literals. Decimal integer literals. An integer literal consisting of a sequence of digits is taken to be decimal integer literals unless it begins with digit 0. For example, 1, 2, 3, 4, comma, minus 50, comma, plus 100 मीन्स यहाँ पॉजिटिव साइन भी ले रहा है, नेगेटिव साइन भी, एंड 1 2 3 4 के फॉर्म में वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड, octal integer literals. A sequence of digits starting with 0 is taken to be an octal integer. It starts from symbol 0 and 0 followed by letter O. For example, student, 0 और 10 रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल 8 को, और अगर आप इस पूरे ऑक्टेल इंटीजर लिटरल को नम में स्टोर कराते हैं, देन प्रिंट कमांड के थ्रू अगर आप नम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन यू गॉट आउटपुट 8. It will print the value 8. Now C is hexadecimal integer literal. It starts from 0x means 0 followed by letter x. अगर हमें नम में वैल्यू स्टोर करवाते हैं, नम इज इक्वल टू 0 OF प्रिंट नम, देन इट विल प्रिंट द वैल्यू 15. मीन्स स्टूडेंट, जो आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर है उसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा A to F होती है. 0 to 9 डिजिट होते हैं और लेटर A to F होता है. After that, floating point literals. It's a part of numeric literals. Floating point literal are also known as real literals. Real literals are numbers having fractional part. It is represented in two form, fractional form or exponent form. First, fractional form. A real literal in fractional form consists of signed or unsigned digit, including a decimal point between digits. For example, 12.0 minus 15.86, etc. Second, exponent form. It consists of two parts, mantissa part and exponent form. For example, 10.05 can be represented as 0.105 into 10 raised to power 2 is equal to 0.105 E02, where 0.105 is mantissa and 02 after letter E is exponent form. Next, Boolean literals. Student, it is a third type of literals. A Boolean literals in Python is used to represent one of the two Boolean values, true or false. Boolean literal में हमेशा कितनी वैल्यू यूज होती है, only two, which is in the form of true or false. These are the only two values supported for Boolean literals. For example, अगर आपने Python prompt to assign true value टू इज़ मैरिड वेरिएबल और आप उसको टाइप करवाना चाहते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1. अदरवाइज अगर वो वैल्यू वहाँ मेंशन नहीं होती है तो आपको एज आउटपुट क्या मिलेगा, 0. 1 रिप्रेजेंट ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट फॉल्स. लास्ट, स्पेशल लिटरल नन.
Python has one special literal which is none. It indicates absence of value. In other language, it is known as null. It is also used to indicate the end of list in Python. For example, if you write salary in front of the Python prompt is equals to none. अगर कोई भी सैलरी अवेलेबल नहीं है then उस वेरिएबल में ब्लैंक स्पेस रखने की जगह नन टाइप कर दिया जाता है जो इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को. The none value in Python means there is no useful information or there is nothing here. Python doesn't display anything when asked to display the value of a variable containing value as none. The student printing with print statement on other hand show that variable contain none.